students, welcome to today's lecture. So, from today we are going to start with unit number 4, that is fluid dynamics. So till now we had seen unit number 1, which was properties of fluid. Here in that unit we had seen introduction of the fluid. What are the different properties of the fluid? What are the classification of fluid? Unit number 2 was fluid statics. In fluid statics we had seen three topics. The first one is what is fluid statics and what pressure measurement, then hydrostatic forces on surface, and third was flotation and buoyancy. Then in unit number 3, that is kinematics of fluid, we had seen the study of fluid in motion without considering the various forces acting on it. Okay, so in unit number 3 we had seen the different properties such as fluid velocity, fluid acceleration, then what are the different types of acceleration, local acceleration, convective acceleration, okay, velocity, potential, stream function, and so on. Now, in unit number 4, actually unit number 4 is one of the biggest unit, okay, because unit number 4 और 5 में प्रीवियसली यूनिट नंबर 4 मतलब जूनियर सिलेबस का यूनिट नंबर 4 और 5 था, उसको कंबाइन करके न्यू सिलेबस का यूनिट नंबर 4 बनाया. Okay, so here the syllabus is a little bit bigger. Okay, so in unit number 4, first of all, you can divide this unit again into three parts. So first part is basically deals with what is the governing equation for fluid dynamics. Okay, what is Euler's equation of motion, Navier-Stokes equation, then Euler's equation of motion along streamline, then Bernoulli's theorem, modified Bernoulli's theorem, okay, and problems on Bernoulli's theorem. Okay, after that, the part number 2 of unit number 4 is what are the applications of Bernoulli's theorem. So application of Bernoulli's theorem includes venturimeter, orifice meter, pitot tube, static pitot tube. Okay, then in this year one new topic is introduced, that is Coriolis flow meter. Okay, after that introduction to orifice and notches, and in the syllabus it is mentioned no numericals of orifice and notches. Okay, after that next is laminar flow. Okay, now this laminar flow, previously it was unit number 5, so this topic from unit number 5 is merged to unit number 4 in new syllabus. Okay, so here we are going to see how the flow take place when the flow of the fluid take place through a pipe. Okay, then how the flow will take place, laminar flow will take place between two fixed parallel plates. Okay, and how the flow will take place when one plate is fixed and second plate is moving, that is Coulter flow. Okay, so all this we are going to see in unit number 4. So first of all, quickly we will discuss what are the different types of forces acting on any fluid. So whenever the fluid is flowing, okay, we know according to Newton's law of motion, the net force acting, okay, or the sum of the forces acting on the fluid element is equal to the product of mass of the fluid element and its acceleration. Okay, so summation of F equals to m into A. Okay, so whatever the sum of forces acting in x direction Fx is equal to m into Ax. Similarly, summation of forces acting in y direction Fy is equal to mass into acceleration in y direction, and so on. Okay, so F equals to m into A. Now we will see what are the what is this F. Okay, so this F is nothing but net force, or sum of all forces. So what are the different types of forces which can act on fluid elements? So one by one we are going to see. So in fluid flow, the forces acting on any fluid element are first the gravity force. Okay, that means whenever the fluid is flowing, okay, suppose this is a mass of the fluid, yeah, it is flowing in x direction. So whenever the fluid is flowing in x direction, its weight is acting in y direction. Okay, so that force is due to acceleration due to gravity or simply gravity. So this force is called as gravity force. So gravity force is always acting in downward direction whenever the fluid is flowing. After that, next is pressure force. Okay, now we know, suppose there are 2 points, this is point A and this is point B. Okay, and pressure of A, or pressure of A is greater than pressure of B. Okay,
whatever the pressure at point A, it is greater than pressure at point B. So we know the flow always take place from a point at a higher pressure towards the point at a lower pressure. Okay, we know the best example is monsoon. How the monsoon flows uh, in the summer days, uh, mostly at the end of May. Low pressure region is created in Himalayas, and high pressure region is created in the sea. So basically, from high pressure region, that is from the sea, the wind flows towards the Himalayas. Okay, so this is the best example of pressure force. Okay, so fluid is always flowing under the action of pressure force, and this pressure force is nothing but it is due to pressure difference. Okay, so pressure force Fp, in this case pressure force Fp is nothing but pressure difference Pa, okay, minus Pb, whatever the pressure difference Pa minus Pb multiply by cross section area of flow. Okay, so Pa minus Pb into A, so this is nothing but the pressure force. After that, next is viscosity force or force due to viscosity, denoted by Fv. Okay. Now this we know whenever the fluid is flowing, we had seen the example of glass of water and glass of honey. आप हनी और ग्लास को दोनों को एक साथ पोर करोगे, so you will observe water is flowing easily and honey is flowing slowly. Why? Because the viscosity of honey is high as compared to water. Okay, so because of that, more resistance is offered to the flow by honey as compared to water. Okay, so more the viscosity of the fluid, more will be the resistance to flow. Okay, so this viscosity force is opposing force. Okay, gravity force is acting in downward direction. Pressure force is responsible for flow. Okay, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर का उतने ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो होगा. Okay, so प्रेशर फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स. जितना ज्यादा प्रेशर फोर्स होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो होगा. सिमिलरली जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना स्लो फ्लो होगा. ओके, बिकॉज विस्कोसिटी इज ऑपोजिंग फोर्स. जो ऑपोज कर रहा है फ्लो को दैट इज विस्कोसिटी, एंड जो असिस्ट कर रहा है फ्लो को दैट इज प्रेशर फोर्स. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट फोर्स. नाउ वी नो now the best example of turbulent force is you can say impact of jet in turbine. Okay, turbine में क्या होता है? Turbine में there is a nozzle is present. Okay, and from the nozzle a high velocity jet is coming and it is impacting on the blades. Okay, so basically we know what is turbulent force or what is turbulent flow. We had seen in our last lecture, turbulent flow, it is a type of flow in which when the velocity of the fluid is very high. Okay, and basically जो उसकी layer होती है, layer cross each other, so because of that eddies currents are formed. Okay, so all these are the examples of, or this is a explanation for turbulent flow. Okay, so example of turbulent flow, we had seen flow of river is an example of turbulent flow. Then flow of water through pipe, it is an example of turbulent flow. Then flow of air through fan, it is also an example of turbulent flow. Okay, so आप एक एग्जांपल कर सकते हो. आप फैन के सामने हाथ रखो, पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ एयर, इन फ्रंट ऑफ फैन. आप ऑब्जर्व करोगे फैन आपके हाथ के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ओके, दैट इज नथिंग बट टर्बुलेंट फोर्स. जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा फैन का उतना ज्यादा आपको हाथ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ओके, या फिर आप कार से हाथ बाहर निकालो. ओके, एयर का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एयर के कारण आपके हाथ के ऊपर कुछ फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है. दैट इज नथिंग बट टर्बुलेंट फोर्स. ओके, so turbulent force is due to turbulence. Then next is compressibility. Okay, now we know, suppose आपने कोई भी वॉल्यूम को, suppose you take the example of piston cylinder arrangement. Okay, piston cylinder arrangement is there and you are initially the volume is V, you had applied the force F. Okay, so this volume V1, it will change to, or it will reduce to V2. Okay, then remove this force F. You will observe some force is exerted by these gases. Okay, जो compressed gas था वो compressed gas खुद कुछ force exert करेगा piston को and piston will move forward. Okay,
So this force is nothing but compressibility force. Okay, so whenever the fluid is compressed, the fluid has ability to exert the force on the body and do its expansion. Okay, so fluid जब expand होता है तो वो जो surrounding के body है उसके ऊपर कुछ force exert करता है. Okay, so that flow force is nothing but compressibility force. Okay, so these are the different types of forces which are present in any flowing mass of fluid. Okay, so this summation of force Fx is nothing but it is a sum of gravity force plus pressure force plus viscosity force plus turbulent force plus compressive force. So we can say the net force acting, okay, in x direction, suppose Fx is nothing but gravity force. We are talking about x direction, so let gravity force in x direction plus pressure force in x direction plus viscosity force in x direction plus turbulent force in x direction plus compressive force in x direction. Okay, similarly you can have the summation of force in y and z direction. Okay, so we can put the above values. Okay, so we will have uh, the summation of Fx equals to m into a. Therefore Fgx plus Fpx plus Fvx plus Ftx plus Fcx equals to mass into acceleration in x direction. Now basically in fluid mechanics, okay, in fluid mechanics we are talking about liquids, and liquids are incompressible in nature. Okay, so if uh, the force due to compressibility is neglected, okay, or for incompressible flow, basically liquid flow, Fc is negligible. Okay, compressibility force is acting majorly for gases, because gases are compressible in nature. Liquid जो है वो incompressible in nature है, so because of that Fc will be negligible. So we can reduce the summation of Fx as Fgx plus Fpx plus Fvx plus Spx. Okay, okay. So if you equate this with mass into acceleration, okay, so Fgx plus Fpx plus Fvx plus Ftx equals to mass into acceleration in x direction, similarly in y and z direction. Okay, so this equation, it will give us Reynolds equation of motion. Okay, so the analysis of this motion, it will give us Reynolds equation of motion. Okay, and basically this Reynolds equation of motion, ये जो इक्वेशन होता है ये आपको सिलेबस में नहीं है, बट ये इक्वेशन सॉल्व करके आप कोई भी सिमुलेशन कर सकते हो. ओके, जो आपके वेदर का फोरकास्टिंग नहीं होता है कि यहाँ पे 2 दिन के बाद बारिश आएंगी, या फिर 2 दिन के बाद यहाँ पर बारिश आ सकता है, या फिर तूफान आ रहा है, समुद्र में तूफान हो रहा है. ओके, सो वो जितना भी सिमुलेशन किया जाता है वो ये 4 फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, ये इक्वेशन को कंप्यूटर पे, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन डाल के सॉल्व किया जाता है. ओके, और ये इक्वेशन को हम बोलते हैं रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. So basically Reynolds equation of motion is not in your syllabus because it is a very complicated equation and it is applicable to all the types of turbulent flow which are existing in nature. Okay, now suppose turbulence को हमने neglect कर दिया. Okay, if you are neglecting the turbulent flow, for example आपको simulation करना है. Okay, जो आपका blood हो रहा है, blood body में flow हो रहा है, so basically body में जो blood flow होता है वो laminar में flow होता है. Okay, तो उस केस में फोर्स ऑफ टर्बुलेंस 0 रहेगा. ओके, सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द लैमिनर फ्लो व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन नेचर, ओके, सो इन दैट केस टर्बुलेंट फोर्स विल बी नेग्लेक्टेड, सो Ft will be negligible. Okay, so the equation will be simplified to Fx equals to gravity force plus pressure force plus viscous force. तो आपने ये तीनों फोर्सेस को सॉल्व किया विथ रिस्पेक्ट टू equating to mass into acceleration. Okay, so this equation is called as Navier-Stokes equation. Okay, and यहाँ पे हम viscosity ले रहे हैं, so basically this Navier-Stokes equation it will be applicable to all the real fluids. Okay, जो भी real fluids existing in nature है उन सब के ऊपर ये applicable है. Okay, and basically Navier-Stokes equation it is used in CFD. Okay, आपके जितने भी CFD सॉफ्टवेयर्स होते हैं, okay, आपका एनसिस फ्लुएंट हुआ, ओपन फॉर्म है, ओके, और बहुत सारे जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, सो बेसिकली दे आर सॉल्विंग द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. उनका जो कोडिंग होता है, उनका जो प्रोग्रामिंग होता है,
वो सिंपली नेवियर स्टोक इक्वेशन होता है। आप जो भी बाउंड्री कंडीशन डालते हो वो नेवियर स्टोक इक्वेशन में सॉल्व किया जाता है और आपको सिमुलेशन के रिजल्ट मिलते हैं। ओके, एंड दिस नेवियर स्टोक इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द रियल फ्लूइड्स। ओके, okay, after that, if we talk about the ideal fluid, now what is ideal fluid? We had discussed ideal fluid is a fluid in which there is no surface tension, there is no viscosity. Okay, so if viscosity is assumed to be zero, okay, or the fluid is assumed to be ideal fluid. Okay, so if the flow of the fluid is assumed to be ideal, so in this case the viscosity of the fluid will be zero, therefore viscous force Fv is zero. Okay, so the equation where the effect of viscosity is neglected, so that type of equation is nothing but Euler's equation of motion. Okay, so आपको syllabus में Euler's equation का differentiation मतलब derivation है. Okay, so for Euler's equation of motion, the equation which we are going to solve here, only two forces are considered: gravity forces and pressure forces. Okay, so summation of Fx, which is Fgx plus Fpx, equals to mass into acceleration along x direction. Similarly, Fgy into Fpy equals to am into ay. Fgz plus Fpz equals to mass into acceleration in z direction. Okay, so solving this equation, you will get Euler's equation of motion. Okay, so we will start with our first derivation, which will be for Euler's equation of motion. Okay, so the Euler's equation of motion, as discussed above, it is a equation in which only forces due to gravity and pressure are taken into consideration. Okay, and all the remaining forces are neglected. Okay, so all the remaining forces will be assumptions. जो आपने neglect किया है वो आपने assume कर लिया है कि they are negligible. So assumption made in Euler's equation of motion will be here the effect only the effect of pressure and gravity are considered. First assumption. Okay, second assumption, the fluid is ideal fluid. हमने viscosity force zero कर दिया है, so fluid is ideal fluid. Third assumption, the effect of turbulence is neglected, so ft हमने zero किया है. Next assumption, the fluid is incompressible fluid. Okay, यहाँ पे हमने fluid को incompressible fluid बोलते हैं. Okay, जब आप compressible fluid assume करते हो तो आपने एक already fluid thermodynamics में equation derive किया, that is called as steady flow energy equation. Okay, SFEE. So SFEE is applicable to compressible fluid. Okay, जब आप gases की बात करोगे तो gases में आपका कौन सा equation applicable होगा? Steady flow energy equation. Okay, और जब आप incompressible flow की बात करोगे, liquids की बात करोगे, तो basically वहाँ पे Euler's equation of motion और इसी का integration होके Bernoulli's equation ये applicable रहेगा. Okay, now we will see the derivation. So consider a streamline. Okay, now consider a streamline as shown in the figure. Okay, now you can see this is a streamline. This is a streamline. So consider any streamline as shown in the figure like this in along S direction. So this direction is S direction. Okay, this direction is S direction. Now consider any cylindrical cross-section element. You can consider here any cylindrical cross-section element like this. Okay, along X direction. Let cross-section of this area, cross-section is dA. Okay, this cross-section is dA and length is ds. Okay, so length of this fluid element is ds and its cross-section is dA. Okay, now the forces acting on this cylindrical element are, so first will be pressure force. Okay, so here on one of the end, okay, consider this lower end, the pressure acting is P. Okay, so if cross section area is dA, so P into dA, so pressure force, so pressure force acting will be P into dA. Okay, so this will be the pressure acting at inlet, P1. Okay, now pressure acting at P2 at outlet. Okay, so at outlet, whatever the pressure at inlet plus rate of change of pressure. Okay, हमने already देखा है. Okay, inlet minus outlet. Okay, या फिर mass हमने mass law of conservation of mass देखा था. Inlet, whatever the mass flow rate at inlet minus mass flow rate at outlet,
that equals to rate of change dm by dt. Okay. Similarly, in this case, whatever the pressure at inlet Pi minus pressure at outlet PO, this equals to whatever the rate of change of pressure. Okay. So it will be del P by, suppose direction is S, so del S into ds. Okay, ये partial differentiation है, so इसको हम complete करेंगे. So del P by del S into ds. Then this outlet pressure will go outside. Okay, or sorry, outlet minus inlet करेंगे, outlet minus inlet. So this Pi will go right side. So it will be PO equals to Pi plus del P by del S into ds. Okay, so whatever the pressure at inlet is P, so at the outlet the pressure will be P plus del P by del S into ds. Okay, ये प्रेशर हो गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, सो प्रेशर फोर्स हो जाएगा. ओके, so the pressure force at outlet will be P plus del P by del S into ds. Okay, whole into dA. Okay, and its direction will be opposite to inlet. Okay, so if this is positive direction, so इसको हम negative direction के साथ लेंगे, opposite direction. Okay, after that, so these are the pressure forces. अब इसके हम अलावा हमें कौन सा इफेक्ट देखना है? Gravity forces. So gravity force is always acting in vertically downward direction. Okay, so it will be acting in vertically downward direction. So let this downward direction or vertical direction is making an angle theta with center line of the fluid element. Okay, center line of the fluid element के साथ जो ds direction है वो angle theta बना रहा है. Okay, so we know this weight acting in downward direction will be W. So इसके component, okay, this W, you can resolve this into two direction. If this angle is theta, so this is W cos theta and this is W sin theta. Okay, W sin theta. तो बेसिकली हम h डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा? W cos theta. After that we know gamma is equal to weight upon volume. Weight upon volume. Okay, so weight is nothing but gamma into volume. Gamma into volume. Okay, now this will be gamma into volume. Volume is nothing but cross section area dA into length. Okay, so length is ds, so it is dA into ds. Okay, dA into ds. So gamma dA ds. Okay, so weight of the fluid element will be gamma. Gamma is nothing but rho g. Okay, so rho g dA ds. So weight of the fluid element is rho g dA ds. Okay, that theta is the angle between the direction of flow, okay, and the line of action of weight. So weight is acting in downward direction. Okay, so आप ये जो weight है rho g dA ds इसको resolve करेंगे. Okay, so जो component act कर रहा है in x direction, that will be cos theta. Okay, so the net force acting along s direction. So first of all, we can see the first force acting is P into dA, and the P into dA is acting in this direction. So we'll take this as positive direction. After that, P plus del P by del S into ds into dA. Okay, this is acting in opposite direction. So we will take negative sign. Again, weight will also acting in opposite direction. So we will take negative sign. Okay, so the net force acting will be P into dA with plus sign, then minus P plus del P by del S into ds, bracket complete into dA, minus rho g dA ds cos theta. Rho g dA ds is weight into cos theta. Okay, component of weight in s direction. Okay, so this should be equals to, okay, this should be equals to mass into acceleration. Okay, now again we know mass is nothing but mass density into volume. Okay, so mass density is nothing but mass upon volume. Okay, so mass is nothing but mass density. Okay, so mass density rho into volume. Volume is dA ds. Okay, ds cross section area, ds is length, so area into length is nothing but volume. Okay,
So equals to rho dA ds into acceleration along s direction. Okay, here as is nothing but whatever the acceleration of the fluid along x direction. Okay, now remember here as nothing but acceleration. So acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time. Okay, and here velocity, it is a function of space and time, it is a vector quantity. So we know v, okay, ये हमने already kinematic में भी देखा है, v is nothing but it is a function of space and time, so s and t. Okay, s and t. Therefore जब हम dv करेंगे, dv, so this dv, okay, ये दो क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है, तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, सो इट विल बी del v by del s into ds plus del v. Okay, ये differentiation of v with respect to s. Okay, similarly differentiation of v, partial differentiation of v with respect to time, so del v by del t into dt. Okay, अब यहाँ पे हमें dv चाहिए कि हमें dv by dt चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड को dt से डिवाइड करेंगे, तो राइट साइड में अभी आपको यहाँ पे ds को dt से डिवाइड करना पड़ेगा और dt को यहाँ dt से डिवाइड करना पड़ेगा. Okay, so dt will cancel. Okay, and we know this ds by dt is nothing but velocity v. Okay, so dv by dt is nothing but v del v by del s plus del v by del t. Okay, so you can see here, so this dv by dt is nothing but del v by del s into ds by dt, del v by del s into ds by dt plus del v by del t into dt by dt. So dt cancel, so it will be v del v by del s plus del v by del t. Okay, so we will put this value of acceleration in above equation. Okay, also here we will make one assumption. Here we will make another assumption. See, ये assumption आपको याद रखना है because the assumption exam में आते हैं. What are the assumptions made for deriving the Bernoulli's equation? Okay, जो basically Bernoulli's equation Euler's equation of motion से आता है. So Euler's equation of motion में जो assumption है वही Bernoulli's के assumption है. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. हमने क्या assumption किया है? पहला assumption किया है कि fluid is ideal fluid. Okay, हमने viscosity को 0 assume किया है, Fv को 0 कर दिया है. So basically fluid is ideal fluid. Then second, the effect of pressure and gravity are considered. Okay, gravity और pressure को हमने consider किया है, बाकी सब हमने neglect कर दिया है. Okay, after that next assumption क्या था हमारा कि next assumption था the fluid is incompressible fluid. Okay, हमने fluid को incompressible बोला था. Okay, तो ये तीन assumption थे. अभी चौथा assumption हम देख रहे हैं. चौथा assumption is the flow is steady flow. Okay, so if the flow is steady flow, so del v by del t is 0. Okay, whatever the rate of change of velocity with respect to time is 0 as per the definition of steady fluid. Okay, तो steady flow के definition के हिसाब से del v by del t 0 हो जाएगा. तो basically acceleration is simply v del v by del s. Okay, so basically local acceleration 0 हो जाएगा. So total acceleration is nothing but convective acceleration. So v del v by del s. Okay, now we'll substitute this in above equation. Okay, so we will have, now see, open this. ये माइनस साइन के साथ आप ओपन करोगे, so ये p del a है, ये माइनस साइन के साथ ओपन करोगे, so p into del a, so it will be minus p into del a. Okay, then minus, ये माइनस साइन के साथ होगा ओपन, minus del p by del s into dA ds. Okay, dA ds. Okay, ये ओपन करोगे ना, so dA into ds. So ये minus p del a plus p del a cancel हो जाएगा. So finally we will have minus del p by del s into dA ds. So minus del p by del s into ds dA minus rho g dA ds cos theta minus rho g dA ds cos theta. Here minus rho dA ds minus rho dA ds into del v del v by del s. Okay, यहाँ पे v रह गया है. Okay, v del v by del s. Now you can see dA ds is common. Okay, so we can divide the entire equation by dA ds. Okay,
So dividing the entire equation by DADS, और DADS के साथ हम रो से भी डिवाइड कर रहे हैं, so रो DADS, okay, so we will divide the entire equation by रो DADS. तो फर्स्ट इसमें डिवाइड बाय रो DADS, so DADS कैंसिल हो जाएगा, रो रह जाएगा, so it is minus 1 upon रो del P by del S, okay, minus 1 upon रो del P by del S. यहाँ पे रो del A del S DADS कैंसिल हो जाएगा, so G बचेगा, G cos थीटा, और यहाँ पे रो DADS पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली V del V by del S. ओके, नाउ ये जो नेगेटिव साइन के जो टर्म है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, सो फाइनली यू विल हैव 1 upon रो del P by del S plus G cos theta plus V del V by del S. Okay, this equals to 0. Okay, now here we will take one triangle. Okay, नाउ ये हमारा एस डायरेक्शन था, ये लेंथ थी हमारी ds. ओके, और ये एंगल जो था, ये एंगल हमारा वर्टिकल एंगल था, इसको हमने थीटा बोला था. ओके, अब इसकी जो वर्टिकल लेंथ है, इसकी वर्टिकल को लेंथ हम बोलेंगे dz. ओके, ये वर्टिकल लेंथ को हम बोलेंगे dz. Okay, so in this triangle the adjacent is dz and hypotenuse is ds, so we will say cos theta. So cos theta is nothing but dz by ds. Okay, adjacent upon hypotenuse, so cos theta equals to dz by ds. So cos theta का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे पूरे इक्वेशन में डिफरेंशिएशन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू s है. ओके, यहाँ पे भी del p by del s है, यहाँ पे भी del v by del s है. ओके, del t वाला टर्म हमने ऑलरेडी जीरो कर दिया है, इसको अज्यूम करके स्टडी फ्लो. ओके, सो हियर यू कैन रिप्लेस दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन del विथ कंप्लीट डिफरेंशिएशन ds. ओके, सो dp by ds dv by ds आप कर सकते हो. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी विल हैव 1 upon रो dp by ds प्लस g dz by ds. ओके, cos थीटा का वैल्यू प्लस v dv by ds इक्वल्स टू 0. यहाँ पे ds तीनों डिनोमिनेटर में है, so we will multiply the entire equation by ds, so ds कैंसिल हो जाएगा. So finally we will have dp by rho plus g dz plus v dv equals to 0. Okay, so finally we will going to have this dp by rho plus g dz plus v dv equals to 0. So this equation is nothing but Euler's equation of motion along a streamline. Okay, so this equation is nothing but Euler's equation of motion along the streamline. Okay, so whenever the flow is taking place, and if you are assuming the flow as ideal flow, okay, so ideal fluid, you are assuming the fluid as ideal fluid, you are assuming the flow as steady flow. Okay, you are assuming the fluid as liquid, so incompressible in nature. Okay, so if these assumptions are made, so basically the equation which governing the flow, that is Euler's equation of motion. Okay, which is dp by rho plus g dz plus v dv equals to 0. Okay, so this is the derivation for Euler's equation of motion. After that we will see the Bernoulli's theorem. So this Bernoulli's theorem can be derived from Euler's equation of motion by integrating it. Okay, so basically Bernoulli's equation can be obtained by integrating the Euler's equation of motion. Okay, so integrating dp by rho, so integration of dp by rho plus integration of dz dgz g dz plus integration of v dv equals to integration of 0. So integration of 0 is constant. Okay, so integration of dp by rho plus integration of g dz plus integration of v dv equals to constant. Okay, now यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको सपोज रो कांस्टेंट अज्यूम करना है. ओके, सो आपको फ्लो कौन सा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल फ्लो. ओके, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का डेफिनेशन क्या था? इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो और द फ्लो इन विच द डेंसिटी एंड हेंस द वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो. The type of flow is called as incompressible flow. Okay, that means एक ऐसा फ्लो जिसमें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग. एयर के फ्लो में, एयर के केस में क्या होता है? जब एयर फ्लो होता है
सो बेसिकली स्मॉल ओपनिंग भी आ जाता है तो एयर उसका वॉल्यूम चेंज कर देता है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो एयर इज अ कॉम्प्रेसिबल फ्लो। एंड लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड के केस में जब भी फ्लो होता है तो उसका वॉल्यूम हरदम कांस्टेंट रहता है। And if volume is constant, so we know mass upon volume. Mass is always constant, volume is also constant. So basically density is constant. So incompressible flow में density हरदम constant होती है. Okay. So if the flow is incompressible, so basically rho is constant. So rho constant रहेगा तो आप one upon rho you can take outside integration. Okay. So वो integration of dp हो जाएगा. So integration of dp will be p. So p by rho plus यहाँ पे g is always constant, so g बाहर गया, so integration of gz is, sorry, integration of dz is z. Okay, so g into z plus integration of v dv, so v dv is nothing but v square by 2 equals to constant. now अभी पूरे इक्वेशन को हम g से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हमें पहले टर्म मिलेगा p बाय रो जी प्लस z प्लस v स्क्वायर बाय 2g। ओके, so p by rho g is nothing but gamma, so p by gamma or p by rho g plus z plus v square by 2g, so this is constant। okay, so this equation is nothing but Bernoulli's equation, okay, which is applicable to all the ideal fluid। ideal fluid जब भी flow हो रहा है, so basically वहां पे जो equation applicable रहेगा, so that equation is nothing but Bernoulli's equation। okay, so Bernoulli's equation states the sum of p by rho g or p by z, so p by rho g or p by gamma, sorry, p by gamma or p by rho g, so this is called as pressure head। okay, ये जो पहला टर्म है p by rho g और p by gamma, this is called as pressure head। okay, pressure head, pressure head। okay, so the sum of pressure head plus this second term, it is called as velocity head, v square by 2g। okay, velocity head। okay, then plus this third term z, so this z is called as datum head। okay, datum head। so this sum of pressure head plus velocity head plus datum head, so this basically इन तीनों के एडिशन को बोलते हैं टोटल एनर्जी हेड, टोटल एनर्जी हेड। 1 minute, आई एम राइटिंग विथ माउस, टोटल एनर्जी हेड। ओके, सो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो कहता है कि टोटल हेड, टोटल एनर्जी हेड विच इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड, so this is constant। okay, so the sum of pressure head, velocity head and datum head, that is total energy head, this is constant, so this is nothing but this is a statement for Bernoulli's theorem। okay, so the above equation is a Bernoulli's theorem। okay, now here there are three terms, p by rho g, v square by 2g and z। so first of all we will say what is this p by rho g। okay, so this p by rho g pressure head, it is nothing but pressure energy per unit weight of the fluid। okay, so p by rho g or p by gamma, it is nothing but pressure energy per unit weight of the fluid। now we know pressure energy। okay, so pressure energy will be, suppose pressure force fp into whatever the length of flow x। okay, so fp into x, this is pressure energy। okay, divided by per unit weight, okay, divided by weight of the fluid। okay, so we know this pressure force is nothing but pressure, whatever the pressure difference into cross section area into x divided by weight, weight is nothing but specific weight gamma into volume, volume is again a into x, so a into x, a into x cancel, so p upon gamma or p upon rho g, it is nothing but pressure energy per unit weight of the fluid, so this is called as pressure head। okay, after that velocity head, so velocity head is nothing but kinetic energy। okay, it is kinetic energy per unit weight of the fluid, so ke upon w। okay, now we know kinetic energy is nothing but mass in
velocity square upon 2. So mv square by 2 divided by weight. Weight is nothing but m into g. So mm cancel, ये g डिनोमिनेटर में चले जाएंगे. So it is v square upon 2g. Okay, so v square upon 2g is nothing but kinetic energy per unit weight of the fluid. Remember these definitions. Okay, pressure head is nothing but pressure energy per unit weight of the fluid. Kinetic velocity head is nothing but kinetic energy per unit weight of the fluid. And third is datum head. Okay, so datum head is nothing but potential energy per unit weight of the fluid. Now potential energy upon weight of the fluid, it is nothing but datum head. Now we know, consider this is body. Okay, and its location from the earth's surface is z. Okay, so the potential energy of this body will be mgz. Okay, so this potential energy is nothing but mgz divided by weight. Weight is nothing but mg. Weight is nothing but mg. So mg cancels, so only z is left. Okay, so this z is nothing but it is datum head denoted by z. अगेन हम इनके यूनिट देखते हैं. ओके, सो P बाय गैमा. ओके, सो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड स्पेसिफिक वेट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, सो वी कैन रिराइट दिस एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू, ये रिवर्स हो जाएगा. ओके, डिनोमिनेटर में. सो मीटर क्यूब पर न्यूटन. So Newton cancel, square will cancel with cube. So unit of pressure head is meter. Okay. Similarly, kinetic energy का देखते हैं. Kinetic energy per unit weight, velocity head का. So velocity head is v square upon 2g. Okay. So v square क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. v का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन g. So g is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर के साथ ओपन करेंगे. सो इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिवर्स हो जाएगा. ओके, सो इट इज सेकेंड स्क्वायर पर मीटर. ये मीटर कैंसिल होगा स्क्वायर के साथ, और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपली मीटर. सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हेड इज आल्सो मीटर, यूनिट ऑफ प्रेशर हेड इज आल्सो मीटर, और z तो इसका भी यूनिट मीटर है. ओके, सो द यूनिट ऑफ ऑल डेटम हेड, वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड. ओके, द यूनिट ऑफ ऑल दिस इज मीटर. देयरफॉर इन तीनों का सम, जो टोटल एनर्जी हेड है, उसका भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा. ओके, आफ्टर दैट, या फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. ओके, एक तो डेरिवेशन पूरा पूछा जाता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, या फिर कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, डिराइव बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो आपको सिंपली कभी इतना क्वेश्चन पूछा है कि बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखने वाले वो लिखना है, फिर यूलर्स इक्वेशन लिखना है डायरेक्टली, dp बाय रो प्लस dgz प्लस v dv इक्वल्स टू 0. डायरेक्टली यूलर्स इक्वेशन लिखना है. उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करके इतना जो छोटा सा डेरिवेशन है, ओके, ये लिखना है. ओके, आफ्टर दैट कभी कभी पूछता है व्हाट आर द, सिंपली आपका इतना पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड इन बर्नौलीज थ्योरम. ओके, सो रिमेंबर अजम्पशन. आपको डेरिवेशन समझा तो अजम्पशन डायरेक्टली याद हो जाते हैं. ओके, पहला अजम्पशन क्या हमने एज्यूम किया था कि विस्कोसिटी इज 0, देयरफॉर द फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड. ओके, सो द फर्स्ट अजम्पशन इज द फ्लूइड इज अ आइडियल फ्लूइड एंड इट्स विस्कोसिटी इज 0. ओके, सेकंड अजम्पशन हमने क्या किया था बीच में? डेल बी बाय डेल टी को 0 किया था. ओके, मतलब हमने वहां पे एज्यूम किया था द फ्लो इज स्टेडी फ्लो. ओके, तो सेकंड अजम्पशन इज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज स्टेडी फ्लो. देन थर्ड अजम्पशन हमने स्टार्टिंग में किया था कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, और फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. ओके, हमने टर्बुलेंट फोर्स को 0 कर दिया था. सो बेसिकली फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. हमने डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट की थी ना,
यहाँ पे भी हमने बोला था कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, देयरफॉर रो इज कांस्टेंट। ओके, आपने बेसिकली रो को कांस्टेंट नहीं किया तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन है वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो जाता है, जो ऑलरेडी आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। ओके, ये अजम्पशन हमने कहीं यूज नहीं किया है बट ये आपको याद रखना है। ओके, सो रिमेंबर द फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। दिस आर द फोर अजम्पशन, और ये हर अजम्पशन एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, so remember there are four assumptions which are made in Bernoulli's deriving the Bernoulli's theorem, and they can be asked for 4 marks, सिर्फ इतना क्वेश्चन। ओके, what are the assumption made in Bernoulli's theorem, और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बिकॉज आपको सारे assumption पता है तो आप एक अंडरस्टैंडिंग आता है कि आपको assumption पता है, मतलब आपको डेरिवेशन समझा है। ओके, सो assumptions बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। आफ्टर दैट वाइवा, वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। बर्नौलिस का एक्सपेरिमेंट जिसको पूछा गया वाइवा में। यस मिलिंद, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मिलिंद, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। ओके, ओके, सो ये assumptions जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिमेंबर दिस assumptions। ओके, after that Navier-Stokes equation for real fluids। okay, remember Navier-Stokes equation का डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, और Navier-Stokes इक्वेशन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। ओके, तो आपको जो एग्जाम में है वो सिर्फ Navier-Stokes इक्वेशन का आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Navier-Stokes इक्वेशन, और राइट अ नोट ऑन Navier-Stokes इक्वेशन। ओके, सो आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है वो, इसका डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, सो हम भी नहीं देखेंगे। हम जस्ट यहाँ पे व्हाट इज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे और डायरेक्टली इक्वेशन का फॉर्म देखेंगे। ओके, तो आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली मगअप करना है कभी एग्जाम में पूछा तो, और मोस्टली चांसेस नहीं है। ओके, बट रिमेंबर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन कहाँ यूज होता है? जितने भी आपके एक्चुअल प्रैक्टिकल फ्लो है। ओके, जैसे आपको कोई कार का सिमुलेशन करना है। ओके, आप जो एरोडायनेमिक डिजाइन का जो सिमुलेशन करते हैं, ड्रैग फोर्स निकालते कार के ऊपर। ओके, या फिर आप जो एक्चुअल फैन का या फिर टरबाइन का फ्लो आपको सिमुलेट करना है, पंप का फ्लो आपको सिमुलेट करना है। ओके, या फिर कोई भी विस्कस फ्लूइड है उसका आपको फ्लो सिमुलेट करना है। तो बेसिकली जितने भी रियल फ्लूइड है उसके जो सिमुलेशंस है और आपके जो एक्चुअल सिमुलेशन एक्चुअल फ्लो हो रहा है जो नेचर में, वो दोनों आपको मैच मिलेंगे ऑलमोस्ट 98-99% यूजिंग नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो आपके जितने भी सीएफडी सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, उनका जो कोडिंग किया जाता है वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे किया जाता है। So remember this Navier-Stokes equation. Now what happens in Navier-Stokes equation? We had already discussed. One minute. In Navier-Stokes equation, we are considering the sum of gravity force plus pressure force, okay, plus viscous force. यहाँ पे हम रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, so viscous force, okay, this equals to mass into acceleration. Okay, mass into acceleration। okay, so we know mass is mass into volume divide किया है, so basically ये mass into acceleration, इसको हम यहाँ इक्वेशन में लिखा है रो। okay, into acceleration, so acceleration already हमने देखा था, acceleration is nothing but it is a function of x, y, z and t। okay, so x, y, z and t। okay, x, y, z and t। okay, so हम जब सॉरी वेलोसिटी इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, सो जब हम dv करेंगे, ओके, सो dv इज नथिंग बट डेल v बाय डेल x इंटू dx प्लस डेल v बाय डेल x, सॉरी डेल v बाय डेल y इंटू dy प्लस डेल v बाय डेल z, डेल v बाय डेल z इंटू dz प्लस डेल v बाय डेल t इंटू dt, डेल v बाय डेल t इंटू dt। ओके, फिर आपने dt को पूरे इक्वेशन से डिवाइड किया। ओके, सो फाइनली यू विल हैव डेल v बाय डेल t
ओके, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी बचेगा, तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी इज यू, del v by del y, del v by del y into dy by dt. So dy by dt is v. Del v by del z into dz by dt. So dz by dt is w. Okay. So this is nothing but total acceleration. Okay. Which is the sum of local and convective acceleration. So rho into del u by del t plus u del v by del u by del x. ये हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. So x डायरेक्शन में वेलोसिटी u रहती है. Okay. So del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z. This equals to first of all gravity. So rho into g of x. After that, next will be your pressure force. So pressure force is minus del p by del x. Then after that, viscosity force. Now viscosity force, this viscosity will be varying along x, y, and z direction. Okay, so it will be del del x of bracket 2 mu del u by del x plus lambda into del of vector v plus del by del y mu into del u by del y plus del v by del x plus del by del z of mu into del w by del z plus del u by del z. Okay, so this was whatever the Navier-Stokes equation along x direction. Similarly y और z direction में भी आप इसी प्रकार का इक्वेशन लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी वे रहेंगी. सो इट इज रो इनटू del v by del t प्लस u del v by del x प्लस v del v by del y प्लस del w del v by del z. यहाँ पे z डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रहेंगी वो w रहेंगी. सो रो del w by del t प्लस u del w by del x प्लस v del w by del y प्लस w del w by del z. ओके, राइट साइड में फिर से रो जी वाई ग्रेविटी अलोंग वाई डायरेक्शन, रो जी जेड ग्रेविटी अलोंग जेड डायरेक्शन. यहाँ पे प्रेशर अलोंग वाई डायरेक्शन, सो डेल पी बाय डेल एक्स, प्रेशर अलोंग जेड डायरेक्शन इज माइनस डेल पी बाय डेल जेड. और उसके बाद में ये पूरा इक्वेशन जो है वो विस्कोसिटी का इफेक्ट है. ओके, so this is nothing but the Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है. ओके, बट Navier-Stokes equation इसका इंपॉर्टेंस आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज आप में से कोई सपोज आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम देता है और सपोज इसरो में जाता है, या फिर आप कोई कंपनी में ज्वाइन होते हो यहाँ पे आप डिजाइन डिपार्टमेंट में हो, R&D डिपार्टमेंट में हो. ओके, और आपको कार का या फिर कोई भी बॉडी का फ्लो सिमुलेशन करना है. ओके, सो बेसिकली आपको उसका फिजिक्स पता रहना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है. ओके, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्व हो रहा है ऑन दैट सॉफ्टवेयर, और वो कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहा है. ओके, तो ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आपको मदद किया तो भी चलेगा, किया तो बहुत अच्छा है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और नहीं किया छोड़ दिया तो भी चलेगा, बिकॉज आज तक मतलब ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आज तक एक भी बार एग्जाम में पूछा नहीं गया है. ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में एक तो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज डिराइव बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन, अजम्पशन इन बर्नौलीज थ्योरम, ये पूछे जाते हैं. और कभी कभी यूलर्स इक्वेशन का ये डिफरेंशिएशन आ सकता है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है. ओके, उसका डेरिवेशन, और बर्नौलीज थ्योरम उसका डिफरेंशिएट इक्वेशन. आई थिंक पीपीटी में मैं बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट डालना भूल गया हूँ. ओके, तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ स्टडी फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ओके, इन अ स्टडी फ्लो. ओके, बेसिकली हमारे सारे अजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट में आ जाते हैं. इन अ स्टडी फ्लो. ओके, इन अ स्टडी फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ओके, so in a steady flow of an ideal incompressible fluid, the total energy head always remains constant. Okay, so the total energy head always remains constant. This is the statement for Bernoulli's theorem. वो मैं यहाँ PPT में डालना भूल गया हूँ. Okay, so you can note with the help of pen or paper, in a steady flow of an ideal incompressible fluid, in a steady flow of an ideal incompressible fluid, the total energy head always remains constant. The total energy head always remains constant. This is a statement for Bernoulli's theorem. Okay,
सो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, इन अ स्टडी फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सो हमारे सारे अजम्पशंस उसने बोल दिए, ओके। So in a steady flow of an ideal incompressible fluid, total energy head always remains constant. Okay, so total energy head TH is constant. Okay, so total energy head always remains constant. Now remember this total energy head, it is a sum of datum head plus velocity head plus pressure head. Okay, therefore we can say datum head plus velocity head plus pressure head, it is constant, or Z plus v square by 2g plus p by gamma or p by rho g, it is constant. Okay, so this is nothing but Bernoulli's theorem. ओके, आफ्टर दैट बर्नौलीज थ्योरम का एक्सपेरिमेंट, आई थिंक दोनों बैचेस का हमने लास्ट वीक में कंबाइन लिया था। ओके, सो एक्सपेरिमेंट में क्या था, व्हाट वाज इन द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमारा एक सेक्शन ऑफ पाइप था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले रिड्यूस हुआ है, ओके, उसके बाद में वो इंक्रीज हुआ है। ओके, सो ऐसा है कि हमारा पाइप था, वो पाइप में देयर वेर 13 पीजोमीटर्स और 13 पाइप्स थे which are connected at 13 points. Okay, so ऐसे 13 pipes connected थे। okay, अभी बेसिकली क्या हो रहा था, during the flow as per the Bernoulli's theorem total energy head is constant. Okay, so Z plus P by gamma or P by rho g plus V square by 2g, ये हमारा कांस्टेंट था। ओके, अभी बेसिकली हमने सेंटर लाइन जो था, हमने एक्सपेरिमेंट में सेंटर लाइन को ही डाटा अज्यूम किया था। ओके, सेंटर लाइन को ही डाटा अज्यूम किया था, तो हमने सारे जेड का वैल्यू कितना लिया था, 0 मीटर। वाई, बिकॉज सेंटर लाइन से डिस्टेंस कितना रहेगा, 0। ओके, सो जेड वाज 0। नाउ क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, जेड इज 0, जब फ्लो हो रहा है तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है, जो आपका प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा था। आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे जो प्रेशर था, वो प्रेशर लाइन जब डिक्रीज हो रहा था तो रिड्यूस हो रही थी, बाद में जब एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर लाइन जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। ओके, सो पी बाय रो जी जो था, पी बाय गैमा, ये डायरेक्टली आपने स्केल से मेजर किया था प्रेशर है। ओके, तो जब प्रेशर रिड्यूस हो रहा था तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है Z इज 0, P बाय गैमा इज रिड्यूसिंग, सो इन दोनों को कांस्टेंट रखने के लिए आपका V जो था वो इंक्रीज हो रहा था। फॉर एग्जांपल ये 0 था, प्लस 5 है इक्वल्स टू 10 है। ओके, सो हमारा जब P बाय रो जी का वैल्यू 5 है, हमारा वेलोसिटी का हेड का भी वैल्यू 5 है। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये 4 हो रहा है। ओके, सो ये 4 होगा और टोटल 10 रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 को 6 करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी हेड इंक्रीज होगा जब प्रेशर हेड रिड्यूस होगा। सिमिलरली जब प्रेशर हेड और रिड्यूस होगा 3, तो बेसिकली वेलोसिटी हेड को इंक्रीज होना पड़ेगा अप टू 7, सो दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट, और हमारा डेटम हेड ऑलरेडी 0 था। ओके, सो दिस वाज हैपनिंग। सो आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो वाटर था, ये जो वाटर इट वाज कलेक्टेड इन अ मेजरिंग टैंक। ओके, ये मेजरिंग टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया था। ओके, आई थिंक 35 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर वॉल से क्रॉस सेक्शन एरिया, और आपने एक वॉल था, वॉल को क्लोज किया था। जब वॉल को क्लोज किया तो वाटर कलेक्ट हुआ, तो आपने कोई भी एक हाइट, सपोज 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर राइस के लिए कितना टाइम लगता है वो मेजर किया था। ओके, तो दिस एरिया इनटू राइस आर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, और ये वॉल्यूम कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, सो यहाँ से आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था। ओके, एंड दिस डिस्चार्ज वाज नथिंग बट इट इज फॉर पॉइंट 1, अभी जितना भी वाटर कलेक्ट हुआ है इन टाइम t, सेम वाटर पॉइंट 1 से फ्लो हुआ है इन सेम टाइम t, same water has flown from point 2 in same time t. So this q is nothing but it is a1 into v1 plus a2 into v2 plus a3 into v3। तो बाद में आपको v1 v2 v3 का वैल्यू निकालना था, so v1 was q upon a1, v2 is q upon a2। ओके, और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में ये पूरे के पूरे 13 क्रॉस सेक्शन एरिया दिए थे। ओके, so in this way we had calculated
द वेलोसिटी इज एट 13 पॉइंट, और बाद में उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2 × 9.81 अपने वेलोसिटी हेड निकाला था। ओके, और उसके बाद में लास्ट में आपने डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड तीनों का एडिशन करके आपका टोटल एनर्जी हेड निकाला था। तो हमने बर्नौलीज थ्योरम का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है। ओके, तो होप सबको कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। तो टुडे we will stop here. Okay, we will start the numericals in our next lecture.